नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम सरकारी योजना पर बात करने वाले हैं। ये है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन मतलब ELI स्कीम। हाल ही में 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और अब तो कैबिनेट ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इसका बजट भी काफी बड़ा है, करीब 99,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। हाँ, लगभग 99,446 करोड़। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बने, कर्मचारियों की स्किल बढ़े और सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और इसकी खास बात ये है कि ये दोहरा लाभ देती है, मतलब जो नया कर्मचारी है उसे भी और जो कंपनी नौकरी दे रही है उसे भी। तो ये सिर्फ नौकरियां गिनने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बड़ा लक्ष्य है भारत की जो इतनी बड़ी वर्कफोर्स है उसे फॉर्मल सेक्टर में लाना, मतलब पक्की नौकरी, PF, पेंशन वगैरह। लाखों युवाओं को इससे फायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इसके दो हिस्से हैं ना, भाग ए और भाग बी। जी, पहले भाग ए की बात करते हैं। ये किसके लिए है? हाँ, भाग ए खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में नौकरी शुरू कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टाइमर्स। तो उनके लिए क्या है इसमें? देखिए, अगर कोई पहली बार काम शुरू कर रहा है, EPFO में उसका रजिस्ट्रेशन है और महीने की सैलरी 1 लाख रुपए तक है। 1 लाख रुपए तक, ठीक है। तो उसे 1 महीने की सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिल सकता है, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है 15,000 रुपए। अच्छा, मैक्सिमम 15,000 रुपए। और ये मिलेगा कैसे, मतलब एक साथ या? नहीं, ये 2 हिस्सों में मिलेगा। पहली किश्त मिलेगी 6 महीने लगातार नौकरी करने के बाद। 6 महीने बाद, हाँ। और दूसरी किश्त मिलेगी पूरे 12 महीने यानी 1 साल नौकरी करने के बाद। पर उसके साथ एक और शर्त है, एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स भी पूरा करना होगा। एक कोर्स भी? ये दिलचस्प है। हाँ, और एक और अच्छी बात ये है कि इस इंसेंटिव का कुछ हिस्सा सीधा सेविंग्स अकाउंट में डालने का भी प्रावधान है, ताकि बचत की आदत पड़े। ये तो बढ़िया सोचा है। और पैसा सीधा अकाउंट में आएगा? जी बिल्कुल, सीधा आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। इसमें ABPS सिस्टम मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का इस्तेमाल होगा, तो पूरी पारदर्शिता रहेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ भाग ए जो नए कर्मचारियों के लिए है। अब आते हैं भाग बी पर। ये कंपनियों के लिए है ना, जो नौकरियां दे रही हैं। सही कहा। भाग बी सीधा नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को टारगेट करता है, उन्हें नई नौकरियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो उनके लिए क्या शर्तें हैं? इसमें ऐसा है कि जो छोटी कंपनियां हैं, मतलब जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। कम से कम 2? और जो बड़ी कंपनियां हैं, 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे। और ये नौकरी कम से कम 6 महीने तक चलनी चाहिए। ओके, और बदले में कंपनियों को क्या मिलेगा? तो कंपनी को हर नए योग्य कर्मचारी पर, मतलब जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने तक है, उसके EPF सैलरी स्लैब के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। कितना इंसेंटिव? ये स्लैब पर निर्भर करेगा। जैसे अगर सैलरी 10,000 रुपए तक है तो 1,000 रुपए प्रति माह तक मिल सकता है। 10,000 से 20,000 सैलरी पर 2,000 रुपए तक और 20,000 से ज्यादा पर 3,000 रुपए प्रति माह तक। अच्छा, 3,000 रुपए तक हर महीने हर नए कर्मचारी पर? जी हाँ, और ये पैसा सीधा कंपनी के पैन लिंक्ड बैंक खाते में जाएगा। अनुमान ये है कि अकेले इस भाग बी से ही करीब 2.6 करोड़ नई नौकरियां बन सकती हैं। 2.6 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, ये इंसेंटिव कंपनी को कब तक मिलेगा? ज्यादातर सेक्टर्स के लिए तो ये इंसेंटिव 2 साल तक मिलेगा। सिर्फ 2 साल? हाँ, लेकिन इसमें एक खास बात है। एक सेक्टर है जिस पर सरकार का विशेष ध्यान है, वो है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र। ओह हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए क्या लगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये इंसेंटिव की अवधि 2 गुनी रखी गई है, मतलब 4 साल तक। 4 साल? ऐसा क्यों? मैन्युफैक्चरिंग को इतनी तवज्जो क्यों? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता होती है और ये भारत के औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी सेक्टर है। तो सरकार इसे एक तरह से बूस्ट देना चाहती है। समझ गया, मतलब जहाँ ज्यादा नौकरियां बन सकती हैं वहाँ ज्यादा लंबा सपोर्ट। ये लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। एक और बात जो बार बार आ रही है वो है EPFO रजिस्ट्रेशन का जरूरी होना। ये क्यों इतना अहम है स्कीम में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। EPFO रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाकर ये योजना असल में लाखों युवाओं को अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से निकालकर फॉर्मल इकोनॉमी में ला रही है। इसका क्या फायदा होगा कर्मचारी को? सुरक्षा मिलती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम,
ये चीजें अक्सर असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलती। सही बात है। तो ये उनके भविष्य के लिए एक तरह की सिक्योरिटी है। बिल्कुल, ये उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम है। तो अगर हम पूरी योजना को देखें तो ये कई चीजें एक साथ कर रही है। नौकरियां बढ़ाना, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना, सोशल सिक्योरिटी देना। हाँ, और साथ ही पहली बार नौकरी करने वालों को भी मदद, कंपनियों को भी प्रोत्साहन और मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। सही। तो ये काफी व्यापक और दूरदर्शी नीति लगती है। निश्चित रूप से अगर ये ठीक से लागू हो जाती है तो इसमें भारत की जो रोजगार से जुड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटने में काफी मदद मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को संगठित करने और युवाओं को एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित हो सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, इस तरह की योजना जो फॉर्मल रोजगार पर इतना बल दे रही है, लंबे समय में भारत के युवाओं के करियर बनाने के तरीकों और पूरे लेबर मार्केट को, मतलब श्रम बाजार को कैसे बदल सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। You know, we often talk about the future of work, but what if there was a government plan right now aiming to build more security, more opportunity for literally millions of workers? Well, India's employment-linked incentive scheme, the ELI scheme, is trying to do just that. It's quite a transformative initiative, really designed to open up new paths for people across the country. It really is. And today we're going to, dig into this ELI scheme. It's a major piece from the Union Budget 2024-25. Got the official nod from the Union Cabinet back in October 2023, October 26th to be precise. And the funding, wow. A total outlay of rupees 99,446 crore. Almost 1 lakh crore. That's a huge commitment. It absolutely signals a massive focus on boosting employment growth. So our mission here for you listening is to really pull out the key bits of information from all the sources we've looked at: articles, research papers, official government notes about this pretty ambitious plan. We'll look at what it's trying to achieve, the main features, and ultimately what it could mean for you. And just to give you a feel for the scale, the target is huge. They're aiming for over 3.5 crore new jobs. That's 35 million. And this is within a specific 2-year window, August 1st, 2025 to July 31st, 2027. But importantly, it's not just about the numbers. It's really fundamentally about getting more people into the formal workforce with better social security. Okay, so I understand the core of this scheme is something they're calling a dual benefit approach. Can you unpack that for us? What does that actually mean, and why is it set up that way? Right. The dual benefit approach, it's actually quite strategic. It means they're targeting both sides of the job market at the same time. So on one hand, the supply side, that's the new employees, people joining the formal workforce. And on the other hand, the demand side, that's the employers creating the jobs. Okay. So incentivizing both the worker and the company hiring them. Exactly. They're essentially making it attractive for individuals to seek formal jobs and attractive for businesses to create those formal jobs. The idea is that pushing both levers at once should, really maximize job growth and this push towards formalization. That sounds, complex to manage, but potentially very effective. What kind of numbers are we talking about in terms of impact? The projections are definitely ambitious. The aim is to directly support about 1.92 crore individuals. That's 19.2 million people joining the workforce for the very first time. And just through the incentives given to employers, they project that could create nearly 2.60 new jobs. So 26 million. It's a massive scale. Okay, huge numbers. So let's break down this dual approach. Let's start with part A. Who benefits first here, and what does it actually offer individuals? Right, part A. This part is focused squarely on empowering those first-time employees, the ones just stepping into the formal job market. And who exactly qualifies for this support? Is it any new employee? No, it's specific. It targets first-time EPFO registered employees. So you have to be formally enrolled with the Employees Provident Fund Organization, India's main social security body. And there's a salary cap too. Your monthly salary needs to be up to rupees 1 lakh. Okay, EPFO registered, salary up to 1 lakh. And what's the incentive they get?
The incentive is essentially 1 month's wage, but it's capped at rupees 15,000. 1 month's wage capped at 15K. And how does that actually get paid out? Is it all at once? No, it's split. It comes in 2 installments. Yeah. You get the first part after you've completed 6 months of continuous service in that job. And then the second installment comes after you hit the 12-month mark, so a full year of service. Right, 6 months and 12 months. Now, I saw something interesting about that second payment. There's a condition attached. Yes, you're spot on. This is quite fascinating. To get that second installment, the employee has to successfully complete a financial literacy program. Ah, so it's not just about the money, it's about building capability too. Precisely. It's an investment in their long-term financial well-being. And there's more. A portion of that incentive payment is actually put directly into a fixed period savings instrument or a deposit account for them. Wow, okay, so encouraging saving right from the start, that's quite forward thinking. It really is. Promoting financial prudence, from day one. And how does the money actually reach the employee? Is the process smooth? It seems designed to be very transparent. It uses the Direct Benefit Transfer System, DBT, leveraging the Aadhaar Bridge Payment System, or ABPS. Basically, India's digital identity infrastructure ensures the money goes directly into the employee's Aadhaar-linked bank account. Less leakage, more efficient. Okay, that covers the employee side, part A. But of course, you need businesses to actually create these formal jobs. Yeah. So let's talk about part B. What's in it for the employers? Right. Part B flips the coin. It's all about encouraging businesses, specifically EPFO registered establishments, to create new jobs and, crucially, sustain them. Okay, so what does a company need to do to qualify? Are there minimum hiring numbers? Yes, there are thresholds. It depends on the size of the establishment. If they have fewer than 50 employees currently, they need to hire at least 2 additional employees. If they have 50 or more employees, the bar is higher. They need to hire at least 5 additional employees. 2 more for smaller firms, 5 more for larger ones, and they have to keep these people employed. Correct. In both cases, these new hires must be kept on for at least 6 months continuously for the employer to qualify for the incentive related to those hires. Got it. Sustained employment. And how is the incentive calculated for the employer? Is it just a flat amount per new hire? No, it's tiered. It actually depends on the new employee's EPF wage slab, basically, how much they earn. So for new hires earning up to rupees 10,000 a month, the incentive for the employer is up to rupees 1,000. If the wage is between rupees 10,000 and 20,000, the incentive goes up to rupees 2,000. And for wages over 20,000, but still within that 1 lakh per month overall salary cap for the employer gets rupees 3,000. Interesting. Tiered based on salary. Now, beyond these general rules, I noticed something specific about the manufacturing sector. It seems to get extra support. That's a really important point, yes. Yeah. There's a definite manufacturing sector focus here. While most sectors get these employer incentives for a period of 2 years, the manufacturing sector gets an extended period. They receive benefits for an additional 2 years, meaning 4 years of support in total. 4 years for manufacturing versus 2 for others. Why the special treatment? Well, the thinking is that the manufacturing sector has, really significant potential for creating jobs on a very large scale. Plus, it plays such a crucial role in India's overall industrial growth and economic development strategy. So it's a strategic bet to give that sector an extra boost. Makes sense. Bolstering a key engine of growth. And similar to the employees, how do the employers get paid their incentives? Again, pretty straightforward and direct. The incentives are transferred directly into their PAN-linked bank accounts, so linked to their permanent account number, the tax ID. Keeps things traceable and efficient. Okay, so if we kind of zoom out now and look at the bigger picture, this ELI scheme, it seems to be doing much more than just hitting job creation numbers, right? It feels like it's aiming for broader changes. Absolutely. That's a key takeaway. One of the most significant impacts is how it acts as a formalization driver. Remember that mandatory EPFO registration. It's a critical requirement for both the employee getting their benefit and the employer getting theirs. Right, so you can't get the goodies without being part of the formal system. Exactly. And the effect of that is potentially huge. It's about pulling millions of young workers who might otherwise end up in informal, precarious work, pulling them into the formal economy. That means regulated employment, better working conditions, legal protections. And crucially, access to Social Security, which is often missing entirely in the informal sector. Precisely. We're talking access to provident funds, pension schemes, things that provide a safety net. So it really is designed to motivate and support young people entering the workforce, not just with a job, but linking it directly to financial good habits and long-term security.
that connection to financial literacy and forced saving under Part A really reinforces that point too. It does. And don't forget the payment mechanisms we talked about, the DBT using ABPS for employees, the PAN-linked accounts for employers. For a scheme of this sheer size, having those transparent, direct routes is vital. Increases accountability, makes the whole disbursement process much smoother, and helps minimize any potential, funds going astray. So wrapping this up then, the ELI scheme really looks like a very comprehensive, very forward-looking policy. It's tackling India's employment challenges head-on, trying to spur economic growth through this clever dual-benefit approach, backed by serious money and with a strategic eye on key sectors like manufacturing. Yeah, I think in essence you can see it as a major step towards formalizing more of the Indian economy and critically ensuring greater social and financial security for the huge number of young people entering the workforce each year. It's about building a more stable, more equitable labor market for the future. So the final thought for you listening in, what does this all mean? Really think about how a scheme like this, on this massive scale, one that puts such a strong emphasis on formal jobs, even weaving in financial literacy right at the start. How might that fundamentally change career paths? How might it reshape the entire labor market for young Indians over the next decade or two? What could the ripple effects be across families, communities, the whole of society? Something to ponder.